आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं एक छोटा सा टाउन है लिस्बन के पास। इसका नाम है कस्काइश। इट हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्योंकि जब आप लिस्बन से अटलांटिक ओशन की तरफ जाते हो तो ये एक टाउन आता है। एक फोर्ट बनता है कस्काइश के अंदर, दैट्स अ होटल नाउ। एक तो लिस्बन को कंकर करना वैसे ही इतना मुश्किल है, उसके बाद बहुत सारे फोर्ट्स भी बन गए अलॉन्ग द टेगस रिवर। तो एनिमीज़ के लिए एग्जैक्टली बहुत डिफिकल्ट था पोर्टुगल को कैप्चर करना। एज यू नो दैट पोर्टुगल वाज अ मैरीटाइम एम्पायर। उसका जो ओशन नेविगेशन और सी ट्रेड रूट्स, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस कि उन्होंने हर जगह पे लाइट हाउसेस क्यों बनाए हुए हैं। एक लाइट हाउस ये है सेंटा मार्ता लाइट हाउस, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट लाइट हाउस। मगर इसका पर्पज़ यही था कि जितनी भी पोर्टुगीज़ शिप्स आ रही हैं उनको गाइड करना। Estava a viver, caminhando na vida, sempre chorando por uma nova ferida. Mas como até que de um mato nasce uma flor, muitas vezes é da dor que vem o amor. Pensava que era engano. Olho seus olhos de luz e vejo anjo. Cascais was a very fisher place, not so important that time. But in 19th century they changed here because the King of Portugal, Dom Luís, decided to build his palace here. And that time they built that big yellow building behind you. That's the most important building we have here. All the noble people, the rich people start living in Cascais. So it was kind of a rich kid's place. Yes, where they yeah. were doing the party. Yeah, that's probably that. And the rich people start build palace. And also it's an expensive place like Cascais. Yeah, now like, it's the most expensive and you place have the in most Portugal. expensive hotels in Yeah, Cascais. not maybe one of the most expensive Well, hotel in Cascais. How And much do you charge for a room? depends. Now you charging between 180 to 100 euros a standard room. I think you should come to my country and start building the hotels. We have a lot of forts. We need to convert them into hotels. It's not easy to that, but yeah, sometimes we have. But it's quite a difficult adaptation. Some historic buildings very important, historic for the community and for the people. They don't like to use that. But yeah, super nice to see you. Yeah, super thank nice you. To meet you. Thank you for your help. Okay. आप कहीं भी जाते हो आपको यूजली परमिशंस देनी पड़ती हैं, बट इनका स्टाफ बड़ा अच्छा था और दे वर वेरी वेलकमिंग and they also offered me like if you can shoot anything else, which I don't think I would be able to in this hotel because now we have to go to Marina और बाकी वहाँ पर देखेंगे। बस time to have a quick break and a coffee. जैसा मैंने आपको होटल में भी कहा था कि अभी हम मरीना जाएंगे, तो दिस इज़ एसेंशली द कस्काइश मरीना। अभी तो बड़ा मॉडर्न हो गया, मगर ऐसा कहा जाता है कि पहले ये बिल्कुल एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी मछुआरों की, फिशरमैन्स टाउन। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे एक जगह पे जा रहे हैं तो उसके आसपास जो मिनिस्टर्स हैं या उस वक्त के नोबल और रॉयल फैमिली है, उन्होंने भी अपने आगे मैंशंस और विलास बनाना शुरू कर दिए और लग्जरी इनका एटमॉस्फेयर था यहाँ पर। Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. So this was Cascais और आज की एपिसोड हम इसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं because we have covered almost everything about Cascais. I hope you liked the video, and if you liked the video, go and watch more videos. And yes, घूमे फिरें और डिस्कवर करें and live your life.